तो पिलाने जमती गोटे कथा थिला कि समस्ते कहते कि सार एजुकेशनल कमिटी एवं कमिशन्स उपरे किसी क्वेश्चन आणतु और एथरे क्वेश्चन आसे पिला माने सब वर्ष। तो आज पिला माने आमे डिस्कशन करबा एजुकेशनल कमिटी एंड कमिशन्स ऊपर ठीक अच्छे एथरो क्वेश्चन हम डिस्कशन करिया पिला माने आज आमे 100+ क्वेश्चन डिस्कशन करिया पिला माने एवं एथिरो आपण एटलिस्ट दुईटा क्वेश्चन तो पिला माने आपण पाई जिवे हैला मिनिमम दुईटा क्वेश्चन आपण पाइबे एग्जाम रे ठीक अच्छे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करिया पिला माने ठीक अच्छे ठीक रुहंतो। ओके तो आम स्टार्ट करछे पिला माने ठीक अच्छे आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा एवं जदि आप प्रिपेयर होती तो ताहले आप आंसर देवा को ट्राए करेंगे ठीक अच्छे। ओके तब डेरी न करी आरंभ करवा ठीक अच्छे चलतु। ओके 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 तो पिलाने टिके कही दूसरी शुणु आप जो बीएड एंट्रेंस रही पिलाने से टोटाल पिलाने अच्छे एजुकेशनल अवेयरनेस पर 10 मार्क्स आसे पिला ठीक अच्छे 10 मार्क्स आसे एवं यही एजुकेशनल कमिटी एवं कमिशन रु किसी क्वेश्चन आपंकर टीचिंग एप्टीट्यूड रे भी पलि आसे ठीक अच्छे। तो ये भी आसे पिला नंबर 10 मार्क ठीक अच्छे। तो 20 मार्क भितर पिला जब आप आज सेशन अटेंड कर मिनिमम आई थिंक 2 ରୁ 3 मार्क आप पाइबे ठीक अच्छे। ओके तेबे आ डेरी न करिए चलतु स्टार्ट करवा आज सेशन। तापर देखिए पिला माने हाँ जदि आप पिला माने बीएड पे प्रिपरेशन करुँच ठीक अच्छे जब बीएड एंट्रेंस में प्रिपेयर होचंदी पिला माने ताहले आपण चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे ठीक अच्छे। एवं जदि आप चाहूँ कि फिजिक्स रो कि केमिस्ट्री प्लेलिस्ट खोजुचंदी पिला माने तो देखो ये चैनल होम पेज है चैनल होम पेज को जिबे होम पेज को जाई पिला आपण प्लेलिस्ट को पलैबे कौटी जी प्लेलिस्ट को जी ठीक अच्छे। आ प्लेलिस्ट को गले पिला आपको ये सब प्लेलिस्ट मिल ठीक अच्छे। ये प्लेलिस्ट पिला आपड़ मिल मैथमेटिक्स क्लास मिल ठीक अच्छे केमिस्ट्री क्लासेस मिल बीएड है देन पिला आपंकर बायोलोजी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन होती तो बायोलोजी भी आपको मिल ठीक अच्छे। देन पिला रहा आप बीएड प्रिपरेशन गाइड है मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट अच्छे पिला तो कौन केमी ओवरऑल केमी आप प्रिपरेशन रहा दरकार ये एग्जाम से प्लेलिस्ट रू आप पाइबे ठीक अच्छे। तेबे आगो बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट करिया पिला माने देखंतु ये है आमर प्रथम क्वेश्चन आरंभ है ठीक अच्छे। देखंतु व्हिच रिपोर्ट led to the establishment of the first formal system of education in India है से कौन कही पिला से कही कि कहार रिपोर्ट फल पिलाने फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम पिला माने स्टार्ट है ठीक अच्छे। पिला आंसर कौन हम आर तो पिला आर आंसर हम पिला आमर ओड्स डिस्पैच है ओड्स डिस्पैच है आपको आउ कौन कह जाए पिला आपको कह जाए पिला कह जाए मैग्ना कार्टा बोली भी कह जाए कौन कह जाए मैग्ना कार्टा मैग्ना MAGN मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोली भी कह जाए ठीक अच्छे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है बुझला पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देखो The Charter Act of 1813 allowed the British government to spend how much money annually on education in India? तो चार्टर एक्ट हेबा फल पिला माने ब्रिटिश माने वर्षु केते टंका खर्च कले भारत रे एजुकेशन पाए तो पिला माने आर आंसर हे जो ऑप्शन बी दैट इज 1 लाख ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पिला माने हु वाज द चेयरमैन ऑफ हंटर कमिशन जोटा कि 1882 मसीह रे हेथिला ठीक अच्छे। आंसर कौन हो पिला आंसर हो पिला कौन आर सर विलियम हंटर दैट इज ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला व्हिच कमिशन इज रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया पिला ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला ठीक अच्छे। तो को कमिशन फल कह ना भारत में वोकेशनल एजुकेशन बा धंदामूलक शिक्षा पिला आरंभ है तो पिला आर आंसर हो ऑप्शन ए दैट इज कोठारी कमिशन ठीक अच्छे। कोठारी कमिशन गोटे स्टेटमेंट पिला पचारे कि
माने कौन भारतर फ्यूचर पे क्लासरूम लिखा हो इन द क्लासरूम्स ऑफ इंडियन स्कूल्स है तो ये स्टेटमेंट पे मन रखिथे ये स्टेटमेंट भी किए कहते ना कोठारी कमिशन कहते ठीक अच्छे चेयरमैन किए थे पे चेयरमैन थे यार डी एस कोठारी बा दौलत सिंह कोठारी ठीक अच्छे मन रहा नेक्स्ट जीवा चलो The primary focus of Wood's dispatch of 1854 was on which of the following? तो कहा ऊपर थिला पिलानी ता Wood's dispatch रे पिलानी प्राइमरी फोकस थिला कोन से माने केमदी प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करि परिबे कोन करि परिबे पिलानी प्राइमरी एजुकेशन को से माने डेवलप करि परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलानी The Hunter Commission of 1882 mainly dealt with the education system at what level? को level education system से तो deal कला कि Hunter Commission तो पहले हमने आर आंसर ही जब पहले हमने ऑप्शन सी that is primary education ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले हमने The Kothari Commission केबे केबे हेतला पहले हमने 64 ରୁ 66 focused on कौन हो पहले हमने ऑप्शन सी that is educational पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पिलाने देखो हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एटा आंसर पिलाने समस्त को जाना थिबो ठीक अछि आंसर कोन हबार आंसर हो पिलाने ऑप्शन ए दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद ठीक अछि ऑप्शन ए हबार करेक्ट आंसर ठीक अछि जवाहरलाल नेहरू कोन थिले पिलाने प्रथम प्रधानमंत्री थिले पिलाने ठीक अछि एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे कमेंट करी जणांतु ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी पिलाने द राधाकृष्णन कमिशन इज ऑल्सो नोन एज ये भी पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला मन रखि तो है कि जो राधाकृष्णन कमिशन थिला पिला माने जार चेयरमैन किए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे चेयरमैन आर अन्य नाम कौन थिला पिला माने मन रखता पिला माने आर अन्य नाम थिला पिला माने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तो 9 नंबर आंसर ही पिला माने ऑप्शन बी दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने क्वेश्चन नंबर 10 Which report of the Kothari Commission led to the National Policy on Education 1986? तो पिलाने देखो ऑप्शन देखो द कमिटी रिपोर्ट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कि द रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन द रिपोर्ट ऑन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन ऑप्शन डी द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 10 आंसर ही जो पिलाने ऑप्शन डी दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द मैकालॉयस मिनट ऑन एजुकेशन वाज रिटन इन व्हिच ईयर को ईयर रे पिला माने कौन है ना मैकालॉयस मिनट इन एजुकेशन लिखाई थिला तो पिला आर आंसर ही जो कोन ऑप्शन बी दैट इज 1835 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द इंडियन एजुकेशन कमिशन ऑफ 1902 वाज हेडेड बाय आंसर कौन हो पिला देखो जॉन वुड विलियम हंटर लॉर्ड कर्जन चार्ल्स वुड तो पिला आंसर कौन हबार आंसर हो पिला माने ऑप्शन सी दैट इज लॉर्ड कर्जन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने व्हिच एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया व्हिच एक्ट पिला माने आर आंसर हो पिला माने ऑप्शन ए दैट इज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमिशन पे मेन रिकमेंडेशन कौन थी ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स ना ऑप्शन डी पे नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम तो पे क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हम पे ऑप्शन डी दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे द मुदलियार कमिशन पे जी कि आसला आप 1959 डेल्ट विथ व्हिच एरिया ऑफ एजुकेशन ऑप्शन ए वोकेशनल एजुकेशन ऑप्शन बी हायर एजुकेशन ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन ना ऑप्शन डी प्राइमरी एजुकेशन तो पे क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कौन हम पे क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हम पे ऑप्शन सी दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन ठीक अच्छे ओके थैंक यू फॉर लाइकिंग द सेशन ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे क्वेश्चन नंबर 16 देखो द एजुकेशन कमिशन ऑफ 64 एंड 66 वाज हेडेड बाय कौन हम पे आंसर पे ऑप्शन सी दैट इज डी.एस. कोठारी दौलत सिंह कोठारी आपको आ कौन कहला पे मन रख आ कहला कोठारी कमिशन भी कहला कौन कहला पे
है कोठारी कमिशन बोली भी कहला। ये काम करथिला का पर पिलाने, ये काम करथिला पिलाने एजुकेशन पॉलिसी ऊपर से काम करथिला, एजुकेशन पॉलिसी ऊपर काम करथिला। ठीक अछि, तो मन रखिया पिलाने कि कोठारी कमिशन जो थिला पिलाने, कोठारी कमिशन को एजुकेशन कमिशन भी कहउथिला एवं जो थिला हमर कोन राधाकृष्णन कमिशन ताकू यूनिवर्सिटी कमिशन बोली भी कहा जाउथिला बा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बोली भी कहा जाउथिला। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलाने, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो पिलाने, व्हिच ईयर से पचास पिलाने व्हिच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन देइछ पिलाने, ताहले आर आंसर हे जो पिलाने 17 ऑप्शन बी, दैट इज 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलाने, हैला, व्हिच इंडियन कमिशन इज नोन फॉर रिकमेंडिंग द प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन विषय रे किए कहिथिला पिलाने ना ऑप्शन सी, दैट इज मुदलियार कमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने, द रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर कमिशन फोकस मेनली ऑन पिलाने कौन हम कहला ABCD, ए दिज एजुकेशन फॉर वुमेन, एक्सपेंडिंग हायर एजुकेशन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन रूरल एरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर ही जो पिलाने ऑप्शन सी, दैट इज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने, which act passed in 19 which act passed in 1835 made English the medium of instruction in Indian schools। तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर ही जो पिलाने ऑप्शन सी, दैट इज मैकॉलेस मिनेट, है ना। तो मैकॉले को आउरी कौन कहा जाए पिलाने ना फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन बोली भी कहा जाए, है एवं ये ही थिले कौन ना जे भारत रे इंग्लिश एजुकेशन को पॉपुलराइज करथिले। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने, है क्वेश्चन नंबर 21 देखो, तो सार्जेंट रिपोर्ट पिला माने जे आस्थिला 1944 रिकमेंडेड कौन करथिले, कौन रिकमेंड करथिला पिला। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो पिला से कौन करथिला ना यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन और एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ना इंप्रूव इन द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ना ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फ्रॉम स्कूल्स। तो पिला क्वेश्चन नंबर 21 रा आंसर हैला पिला इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने, द एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, द एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज कौन पिलाने कोठारी कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने, which education policy was introduced following the recommendations of the कोठारी कमिशंस। कोठारी कमिशन के अनुसार पिलाने को एजुकेशन पॉलिसी लागू होइथिला। तो पिलाने आर आंसर है पिलाने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, दैट इज आंसर ये तुम्हारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इंडियन कमीशन वाज रिस्पांसिबल फॉर रिकमेंडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IITs इन इंडिया। को इंडियन एजुकेशन कमीशन पिलाने रिस्पांसिबल कौन पे ना IIT एस्टैब्लिशमेंट पे। तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो पिलाने ऑप्शन ए, दैट इज कोठारी कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने, व्हिच ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एडा। ठीक अछि, का रिकमेंडेशन रे कोन हितला ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हितला पिला माने। तो आर आंसर हो पिला माने ऑप्शन ए, दैट इज कोठारी कमीशन। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने, द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच इन 1854 वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कौन हो पिला माने कहले देखो लोकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज इन ऑल प्रोविंसेस, ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन अक्रॉस इंडिया, ऑप्शन डी टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर ही जो पिला माने ऑप्शन सी, दैट इज ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड ए नेशनल लैंग्वेज फॉर एजुकेशन, व्हिच लैंग्वेज वाज सजेस्टेड। से क्यों लैंग्वेज सजेस्ट करथिले पिला माने। तो आर आंसर ही जो पिला माने ऑप्शन ए, दैट इज हिंदी। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने, क्वेश्चन नंबर 28, which education commission was responsible for the development of Indian higher education in 20th century। तो पिला से इंडियन हायर एजुकेशन को डेवलप करिया पे केस होउची को एजुकेशन कमीशन होउचंदे रिस्पांसिबल। तो पिला क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो पिला ऑप्शन बी, दैट इज कोठारी कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला
Which of the following reports aimed to promote the study of technical education in India? तो पिलाने कहार रिपोर्ट कौन करथिला ना टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करथिला इंडिया रे ओट्स डिस्पैच कोठारी कमीशन रिपोर्ट राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट ना सार्जेंट रिपोर्ट तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो पिलाने ऑप्शन बी है ना कोठारी कमीशन रिपोर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने the Indian Education Commission of 1902 recommend से कौन recommend करथिले पिलाने देखो से देथिले पिलाने कौन कौन ऑप्शन कौन दीजिए expansion of technical education improvement in secondary education establishment of a university in each province na option D recognition of vernacular languages as medium of instruction तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हो पिलाने improvement in secondary education that is your option B will be your correct answer. Next देखिए पिलाने question number 31 which commission was responsible for the first systematic survey of education in India after independence ठीक अछि after independence पिले कोन पिलाने स्वाधीनता ପରେ पिलाने किए फर्स्ट सिस्टमैटिक सर्वे करथिले एजुकेशन ना पिलाने ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर ही जो पिलाने हाँ तो पिला माने आर आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 31 रो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हम पिला माने ऑप्शन बी दैट इज राधाकृष्णन कमीशन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने कोन द कोठारी कमीशन recommended the establishment of which of the following तो पिला माने आंसर कौन हम कहले क्वेश्चन नंबर 32 रो क्वेश्चन नंबर 32 रो पिला माने आंसर हम कोन Kothari Commission recommended establishment of which of the following? तो पिलाने आर आंसर हबो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट इज आईआईटीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द ओट्स डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एट व्हिच लेवल को पिलाने आंसर कौन हबारो आर आंसर हो पिला माने तमरो प्राइमरी लेवल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ मैकॉलेस मिनिट कोन कहला पिला माने मैकॉले मिनिट कोन कहला ना इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन ठीक अछि ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने The Indian University Act of 1904 was primarily aimed at पिला माने ये कौन करियो पिला माने ये कला कौथरे ना ये कला काम पिला ने इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन ठीक अछि 35 रहबो ऑप्शन सी ठीक अछि तापर असला पिला माने क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशंस वाज टास्क्ड विथ प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ secondary education in India तो पिला आर आंसर कोन हबो 36 रो ये हबला आंसर हबो ऑप्शन बी दैट इज कोठारी कमीशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला ने कोठारी कमीशन प्रपोज्ड दैट द एजुकेशन सिस्टम
in the proposed that the education system should be made option A more flexible and diverse, more rigid and specialized, focused solely on vocational training, the more centered around traditional knowledge. The plan 37 the plan answer kon hobo option A, that is more flexible and diverse. ठीक है. Next question देखिए पिलानी. The Sargent report was an important milestone in the development of which sector of एजुकेशन. तो पिलानी ये भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. देख से कही ना द सार्जेंट रिपोर्ट वाज an important milestone in the development of which sector of education है. तो पिलानी आर आंसर कौन हम को ऑप्शन कौन देख देख ऑप्शन से देख पिलानी ऑप्शन से देख कौन टेक्निकल एजुकेशन है. आ कौन देख ना प्राइमरी एजुकेशन. आ कौन देख पिलानी सेकेंडरी एजुकेशन है. आ कौन देख पिलानी हायर एजुकेशन. ठीक अच्छे. तो पिलानी आर आंसर कौन हम पिलानी आर आंसर हम पिलानी हमारा प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन. ठीक अच्छे. ओके. एक्चुअली ना पिलानी आर आंसर कौन हम जानते ना आर आंसर पिलानी हम हायर एजुकेशन भी हो पार. ठीक अच्छे. कहीं सार्जेंट रिपोर्ट आसला पिलानी सार्जेंट रिपोर्ट आसला 1944 रे. ये कौन रिकमेंड करथिला पिलानी फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन पे ये रिकमेंड करथिला. ठीक अच्छे. एंड प्रपोज 3 ईयर डिग्री कोर्स भी ये रिप्रेजेंट करथिला. ठीक अच्छे. नेक्स्ट देखिए पिलानी नेक्स्ट देखिए पिलानी कौन देछि क्वेश्चन नंबर 39 देखो. The report of the Kothari Commission emphasized the use of which language as the medium of instruction in higher education. तो पिलानी आर आंसर कौन हम आर आंसर हम पिलानी तमरा ऑप्शन ए, दैट इज हिंदी. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलानी द मेन पर्पज ऑफ हंटर कमिशन वाज टू को द मेन पर्पज ऑफ द हंटर कमिशन वाज टू कौन कौन देछि पिला माने ऑप्शन देखिलो. ऑप्शन देखो से कौन कौन देछि देखो. द मेन पर्पज ऑफ द हंटर कमिशन वाज टू introduce reforms in technical education, now assess and improve the primary education in India, establish university in all major cities, ना promote English education. हालांकि पिलानी देख ये यार काम कौन थिला हंटर कमिशन रो ना टू प्रमोट कौन करे प्राइमरी एजुकेशन को. तो ये कौन आसला पिलानी आसला पिलानी टू असेस एंड इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन पचार पिलानी which commission is credited with the development of a national framework for higher education. कौन देछि ना which national commission is credited with the development of a national framework for higher education in India. देखो ऑप्शन कौन देछि पिलाने ऑप्शन देछि पिलाने एठी कोठारी कमिशन, राधाकृष्णन कमिशन, मोदलियार कमिशन ना माकाले मिनिंग. तो पिलाने आर आंसर हबो ऑप्शन बी, दैट इज राधाकृष्णन कमिशन. ए यदि एरा देथियो पिलाने है ये भी देथियो है ना पिलाने आ कौन देथियो तमरा जदि यूजीसी भी देछि ना यूजीसी भी आंसर हे परिबो. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलाने which of the following did the Radhakrishnan commission which of the following did the Radhakrishnan commission emphasize for higher education? Encourage of technical education, extension of education for women, universalization of primary education, improving the quality of teaching at universities. तो पिला आर आंसर ही जीवा ऑप्शन डी. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए in which year did the Indian government introduce the national policy on education for the first time? आंसर है पिलाने ऑप्शन सी, that is 1986. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन वाज हेडेड बाय पिलाने बहुत इंपोर्टेंट है का द्वारा ना ऑप्शन कौन हम ऑप्शन बी, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने क्वेश्चन नंबर 45 the Mudaliar Commission is also known as
कौन हो पिला मैंने ऑप्शन देखो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन नेशनल एजुकेशन कमिशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन ना वोकेशनल एजुकेशन कमिशन तो पिला माने आर आंसर है जो ऑप्शन ए दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला ने देखो which act passed in 1861 was aimed at setting up schools across area India ହେଲା तो पिलानी आर आंसर कौन हो पिलानी आर आंसर हम पिलानी तुमरा इंडियन एजुकेशन एक्ट कौन हम पिलानी आर इंडियन एजुकेशन एक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलानी कोई चैप्टर एक्ट भी तो हो पार टिके रो देची कौन पिलानी which act passed in 1861 was aimed at setting up schools across India तो पिलानी एजुकेशन ओके पिलानी ठीक अच्छे इंडियन एजुकेशन एक्ट हम है नेक्स्ट देखिए पिलानी which commission recommended the setting up of a national book trust in India है क्वेश्चन कौन which commission recommended the setting up of a national book trust in India तो पिलानी ये पिलाने किए कही ठीक अच्छे ये पिलाने क्वेश्चन टी बोधे प्रोब्लेम अच्छी है यहाँ पिलाने एक्चुअली ना नेशनल बुक ट्रस्ट जो अच्छी ना पिलाने ये हूँ एक्चुअली गवर्नमेंट इंडिया एस्टाब्लिश करते है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश करते ठीक अच्छे कौ ईयर एस्टाब्लिश करते पिलाने इन द ईयर पिलाने 1957 है तो ये हेनी है छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने which of the following report focused specifically on post school or higher education तो पिलाने हायर एजुकेशन में को कमिशन होता है हूँ पिलाने आमर यूनिवर्सिटी कमिशन तो यूनिवर्सिटी कमिशन आम कौन कहे पिलाने ना राधाकृष्णन कमिशन बोली आम कहूचे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 emphasized on the development of कौन हम पिलाने रूरल हायर एजुकेशन टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन तो पिलाने ये कौन एम्फसाइज कला पिलाने ये पिलाने ये वोकेशनल एजुकेशन एवं कौन एडल्ट एजुकेशन को पिलाने कौन कला प्रमोट कला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिलाने है ना देखो से पिलाने देखो हंटर कमिशन रिकमेंडेड the establishment of which institution to improve education in India ना तो पिलानी ये कौन कले ना कौन ये फोकस करिया कहले पिलानी देखो कौन कौन देछि पिलानी देख लो ये देछि पिलानी एग्रीकल्चर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड्स पिलानी तो ये कौन हम पिलाने आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड्स है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिलानी व्हिच कमिशन सजेस्ट्स द इंटीग्रेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये कही पिलाने तुमर किए ये कही तुमर पिलाने कोठारी कमिशन ठीक अच्छे आपको आ कौन कहुए पिलाने मन रखी तो आपको कहुए इंडियन एजुकेशन कमिशन बोली भी कहुए ठीक अच्छे चेयरमैन किए थे DS कोठारी को केबे केबे आसते पिलाने केबे केबे 1964 रु 66 है ये जिनस मन रखि है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने देखो द इंडियन एजुकेशन कमिशन ऑफ 1902 सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम अंडर व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल है देखो पिला दीजिए द इंडियन एजुकेशन कमिशन ऑफ 1902 सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम अंडर व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल पिलानी आर आंसर कौन हम पिलानी को आर आंसर कौन हम केबे हितला एडा 1902 रे हितला पिलानी है कि नहीं तो से टाइम रे किए थिले को कहलो को गवर्नर थिले इंडिया रे किए थिले ये थे पिलाने तुम लॉर्ड कर्जन ठीक अच्छे ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने है
The Macaulay minutes of 1835 recommended the teaching of which language in Indian schools? ये पिलाने इंग्लिश है Macaulay देखिला बोले इंग्लिश मार दबा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने which Indian commission is also known for providing a detailed report on secondary education ମାନେ which Indian commission is known for providing a report on secondary education तो पिलाने आर आंसर कौन हम आर आंसर हम पिलाने ऑप्शन बी मोदुलार कमिशन है आपको आउ कौन कहुए पे आपको कहुए तुम सेकेंडरी है सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बोली भी कहुए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे देख सब कही कौन ना इन व्हिच ईयर डिड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन सबमिट इट्स रिपोर्ट है सबमिट इट्स रिपोर्ट है तो पे कौन दे आंसर कौन हबार आंसर हबार पे इन 1949 बा स्पेसिफिकली कहले पे अगस्ट है अगस्ट 1949 रे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे द मोदुलार कमिशन रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ व्हिच काइंड ऑफ स्कूल्स है क्वेश्चन कौन पे द मोदुलार कमिशन रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ व्हिच काइंड ऑफ स्कूल्स से कही पे कौन कौन देती ना नवोदय स्कूल्स केंद्रीय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ना वोकेशनल स्कूल्स तो पे आर आंसर हम पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ठीक अच्छे सीनियर सेकेंडरी स्कूल दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे द इंडियन एजुकेशन कमिशन ऑफ 1902 वाज अपॉइंटेड बाय व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल एबे करथिले पे आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे द प्राइमरी एम ऑफ कोठारी कमिशन The primary aim of the Kothari Commission was to कौन है develop a national policy on education, create vocational colleges, establish technical institutes, ना standardize the educational curriculum है ना देखो ये कौन देची पिलाने देखो ये कौन देची पिलाने को आंसर कौन हबार से पचार कौन ना प्राइमरी एम ऑफ कोठारी कमिशन है ना तो देख ये थिला पिलाने एजुकेशन कौन करियो पिलाने एजुकेशन पिलाने कौन करियो क्वालिटी इंप्रूव करियो ठीक अच्छे गोटे गाइडलाइन बा पॉलिसी गोटे डेवलप करियो ठीक अच्छे तो पिला आर आंसर हो पिलाने ऑप्शन डी दैट इज स्टैंडर्डाइज द एजुकेशनल करिकुलम अक्रॉस इंडिया ठीक अच्छे तापर जे पिलाने कोन तापर जे हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सार्जेंट कमिशन तो पे ये देखो आर आंसर हो पे ऑप्शन बी दैट इज जॉन सार्जेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे व्हिच कमिशन इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हायर एजुकेशन पे तो कौन हम राधाकृष्णन कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे द मैकॉलेज मिनिट फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हिच सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया तो पे ये हम पे आंसर कौन तुम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे व्हिच कमिशन रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द आईआईटी इन इंडिया तो पे आर आंसर हम पे ओके तो पे देख आर पे ना आंसर हम कौन जानछ ना ये होता पे कौन कहल ये सब होता पे 1946 होता बुझल कि नहीं तो आर पे जो आंसर आसूची पे आर आंसर पे एगुड़ा तो पे हेनी है एगुड़ा हेनी एमती क्वेश्चन पूर्व थे करते बोधे करेक्शन करदे पे ठीक अच्छे तो कमिटी कौ कमिटर मानने अनुसार पे पे मन रखता पे सरकार कमिटी मन रखता है सरकार कमिटी है सरकार कमिटी कहवा अनुसार पे आईआईटी होता पे ठीक अच्छे आ हेड किए थे यार पे हेड ये कमिटी हेड किए थे पे हेड थे पे नलिनी रंजन सरकार है कि पे है तापर पे देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे है मन रखता आईआईटी होता कार रिकमेंडेशन रे ना सरकार कमिटी है देख तापर कौन दे पे देख
तापर आसला पे क्वेश्चन नंबर 63 है क्वेश्चन नंबर 63 पे कौन दे देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर आउटकम ऑफ राधाकृष्णन कमिशन है 1948 रु 49 जो थिले है तांकर भितर एटा कौन आउटकम कौड़ा आसी देख क्वेश्चन नंबर 63 पिला माने हाँ देख integration of Indian and British curriculum, introduction of compulsory primary education नहीं, establishment of national environment नहीं, development a comprehensive system for higher education तो पिला देखो ऑप्शन डी ही जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ही जो पिला तुम्हारा कौन ना करेक्ट आंसर ही जीव ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला देखो क्वेश्चन नंबर 64 देखो द मोदलियर कमिशन रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द व्हिच टाइप ऑफ स्कूल्स इन इंडिया तो पिलाने आर आंसर हवा पिलाने ऑप्शन डी दैट इज इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल्स कुछ सेकंड रो लेट मी चेक ओके रो द मोदलियर कमिशन रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ स्कूल्स इन इंडिया तो पिलाने ये कहथिले पिलाने देखो ना मेनली ये कौन कहथिले ना मोदलियर कमिशन कहथिले पिलाने कौन टू रिफॉर्म सेकेंडरी स्कूल है सेकेंडरी स्कूल करा चाहते एवं मल्टीपर्पोज हो ठीक अच्छे मल्टीपर्पोज है तो पिलाने आर पे आंसर आम कौन लिखिपर देख आम ऑप्शन डी लिखिपर है इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल्स बट चेक करदा पिलाने टिके रो आंसर कौन हो पिला आर आंसर हो जाए पिला तुम ऑप्शन डी दैट इज इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल्स ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला है देखो क्वेश्चन नंबर 65 देखो हु चेयर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन पिला आंसर कौन हम 65 रो हम आंसर पिला ऑप्शन ए दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशंस फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन ऑफ एजुकेशन द क्वेश्चन नंबर 66 आंसर हो पिला तमरा ऑप्शन बी कोठारी कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला व्हिच ऑफ the following educational reforms were suggested by the Odisha dispatch of 1854 Odisha dispatch पिलाने कौन कहितला हैला ये हो पिलाने ये कहितला पिलाने कौन ना इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉमन एजुकेशनल करिकुलम ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने क्वेश्चन नंबर 68 देखिबा व्हिच कमिशन प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉमन नेशनल सिस्टम फॉर पब्लिक अक्रॉस इंडिया तो पे क्वेश्चन नंबर 68 पे आंसर हो ऑप्शन ए दैट इज कोठारी कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे द हंटर कमिशन 1882 वाज एस्टाब्लिश्ड टू रिवैल्यूएट द स्टेट ऑफ एजुकेशन अंडर व्हिच ब्रिटिश वाइसरॉय तो पे आर आंसर हो लॉर्ड रिपन दैट इज ऑप्शन बी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे क्वेश्चन नंबर 70 द सार्जिंग रिपोर्ट 1944 मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द रिफॉर्म ऑफ पिलाने कौन हम ऑप्शन सी दैट इज हायर एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिलाने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमिशंस वाज फॉर्म टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया तो पे देखो जो आम सेकेंडरी एजुकेशन पलि आसना आंसर कौन हो पे आंसर हो तुम सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को कौन कहला पे कहला मोदलियर कमिशन तो आंसर कौन हो पे 71 ऑप्शन सी मोदलियर कमिशन हो जाए पिला नंबर आंसर ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 72 देखो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है इन 1986 वाज रिवाइज्ड इन व्हिच ईयर को ईयर पिला रिवाइज कराला ये आंसर हो पिला ऑप्शन ए दैट इज 1992 है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला द सब्जेक्ट रिपोर्ट वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ पिला कौन हम ना ऑप्शन सी दैट इज रिफॉर्मिंग प्राइमरी एजुकेशन ठीक अच्छे तापर देखिए पिलानी गोटे सेकंड पिला मतलब सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द रिफॉर्म ऑफ द सर्जेंट रिपोर्ट मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द रिफॉर्म ऑफ
ओके तो पिलान सुनो सार्जिंग स्कीम सार्जिंग रिपोर्ट जो थिला ना पिलान 1994 कोन 1944 पिलाने ये थिला पिलाने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहउतला कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थिला 6 रु 11 वर्ष और पिलान का पई तो ये कोन थिला पिलाने तुम प्राइमरी एजुकेशन तो सार्जिंग रिपोर्ट पे रिकमेंड रिगार्डिंग द रिफॉर्म ऑफ पे किए प्राइमरी एजुकेशन ठीक अच्छे तापर ये भी जो थी ना पे ये आउट पचार सार्जिंग रिपोर्ट वाज प्राइमरली कंसर्न क्या हम ये भी हम पे रिफॉर्मिंग प्राइमरी एजुकेशन ठीक अच्छे प्राइमरी एजुकेशन हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1902 ट्रू पचार ना पे तो 74 आंसर हो पे ऑप्शन बी दैट इज कौन पे इट वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन 74 पे आंसर हो ऑप्शन बी है दैट इज इट इज चेयर्ड बाय कि लॉर्ड कर्जन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे देख चेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन पड़ा ये है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज ए की रिकमेंडेशन ऑफ द मोदुलर कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन तो पे ये कौन कहला पे मुदलियार कमिशन कौन ये करथिला ये कहला पे कौन कहला कहलो ये करथिला पे स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन ठीक अच्छे स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे the Hunter Commission 1882 suggested the reforms which type of schools 76 पिला से जो कही ऑप्शन कौन हो पिला ऑप्शन हम सी दैट इज प्राइमरी स्कूल्स ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला the Radhakrishnan Commission main focus was the quality of education in कौन हो पिला 77 आंसर ऑप्शन सी दैट इज यूनिवर्सिटीज से आम आपको कौन बोले कहे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बोली आम आपको कहे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे which commission is known for its significant contribution to the policy of promoting universal primary education in इंडिया ठीक है सब पे शुण जो तुम यहाँ पढ़ुच ना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पढ़ुच तार आंसर कौन हम जान पे आर आंसर हम पे तुम ऑप्शन सी ठीक अच्छे ऑप्शन है पे तुम सी दैट इज सर्जेंट रिपोर्ट ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे The Kothari Commission recommended an emphasis on the study of which language as a medium of instruction. तो पिलाने ये कौन कहला पिलाने 79 आंसर कौन थिला पिलाने ऑप्शन थिला पिलाने ऑप्शन बी दैट इज हिंदी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए The Kothari Commission recommended the introduction of what type of education है पिलाने कोठरी कमिशन कौन कहला पिलाने कोठरी कमिशन कहला पिलाने एजुकेशन कौन होता दरकार ना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बोली भी कही ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करिया पिलाने देख द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिशन पिलाने 81 रा आंसर हवा पिलाने तमरो कौन हबो को से पचारची यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिशन तो पिलाने आर आंसर हो पिलाने कौन ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा कि थिला तमर किए राधाकृष्णन कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which of the following commissions recommended the establishment of vocational education schools तो पे आर आंसर कौन हम आर आंसर हम पे कोठारी कमिशंस है कुछ 5 मिनट्स ब्रेक ना पे देन वी विल कंटिन्यू ओके।
आम कौ क्वेश्चन पहुँचते पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 जाए पहुँचते पे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन रिकमेंडेड द वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल तो आंसर हो पे ऑप्शन ए दैट इज योर कोठारी कमिशन एवं ये कौन गोटे जिन मन रखार अच्छे पे मन रखते कोठारी कमिशन आ कौन कहुए कोठारी कमिशन को कहुए पे नेशनल एजुकेशन कमिशन ठीक अच्छे है आ गए थी पे मन रखता नॉलेज एजुकेशन कमिशन कहुए नॉलेज एजुकेशनल कमिशन नॉलेज कमिशन कहुए तार चेयरमैन थे पे सैम पिट्रोडा ठीक अच्छे तार चेयरमैन किए थे सैम पिट्रोडा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे Question number 83. The 1986 National Policy on Education emphasized the need for which of the following? तो पिलाने ये कही पिलाने कौन ना स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल स्टेट्स द abolition of English in schools, strong emphasis on vocational education, the promotion of private education. तो पिला हमने आर आंसर हो पिला हमने कौन ना ऑप्शन ए दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल स्टेट्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला 84 In 1948, the Radhakrishnan Commission recommended the establishment of which type of institutions for higher education? In 1948, the Radhakrishnan Commission recommended the establishment of which type of institutions for higher education? तो पिलाने आर आंसर हो पिलाने तो पिलाने आर पिलाने आंसर हो पिलाने मन रखता नेशनल यूनिवर्सिटीज रीजनल इंजीनियरिंग टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं पिला सुनो देख ये कौन कही ना पे ये पे रिकमेंड करथिला फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी है फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी आम कौन कहे पे कहल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे कोठारी कमिशन proposed that a national educational policy should aim at providing free education for all, reducing the number of schools है बा कौन देछि कहलो आ कौन देछि ensuring high quality education आ कौन देछि पिलाने कहलो ना ऑप्शन डी फोकसिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग अलोन तो पिलाने 85 आंसर हो पिलाने कौन कहलो ensuring high quality education for all social groups ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए who was the chairman of Indian education system कोठारी कमिशन हाँ तो पिलाने को कौन हम दौलत सिंह कोठारी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द मैकॉलेज मिनट वाज बेस्ड ऑन ए रिकमेंडेशन टू प्रमोट प्लान ये कौन प्रमोट करने पे ना इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन तो 87 आंसर पे ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की रिकमेंडेशन ऑफ द मोदेलियर कमिशन तो पिलाने आर आंसर हो पिलाने कौन ना एक कॉमन नेशनल करिकुलम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने क्वेश्चन नंबर 89 द वुड्स डिस्पैच वाज ए डायरेक्ट रिस्पांस टू कौन हो पिलाने डायरेक्ट रिस्पांस टू कौन हम कहल ना द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने द कोठारी कमिशन रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हिच फॉर्म ऑफ एजुकेशन ये इंट्रोडक्शन करथिला पिलाने कौन ना वोकेशनल एजुकेशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने तो ये थिला पिलाने तुमर 90टा क्वेश्चन ठीक अच्छे पूर्व है पूर्व जहाँ किसी आसला है आउ एबे देखिए पिला आमर जो रिसेंटली जो एजुकेशनल पॉलिसी है पिला माने एनईपी 2020 ता ऊपर किसी क्वेश्चन देखि नवा ठीक अच्छे। तब चलते स्टार्ट करवा है देखो स्टार्ट करिया पिला माने एनईपी 2020 है देखो देखो What was the primary goal of National Education Policy NEP 2020 आर पिलाने कौन थिला तमर प्राइमरी कौन थिला पिलाने प्राइमरी गोल कौन थिला आरो ना टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन टू मेक एजुकेशन मोर अफोर्डेबल ना टू प्रोवाइड होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ना टू फोकस सोनली ऑन हायर
एजुकेशन। तो पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 रा आंसर हबो पिला माने ऑप्शन केते हबो पिला ऑप्शन सी दैट इज टू प्रोवाइड होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड ऑल राउंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने which of the following is a key feature of NEP 2020 regarding the medium of instruction? कौन दीजिए पिला देखिला ऑप्शन कौन हम कहल ऑप्शन हम पे ऑप्शन बी हम पे करेक्ट आंसर दैट इज रीजनल लैंग्वेजेस आर एनकरेज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली एजुकेशन। ठीक अच्छे पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर एनईपी 2020 व्हाट इज द proposed age of entry for children into formal school। तो पिला क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कौन हो पिला ऑप्शन हो 3। ठीक अच्छे एवं नुआ जॉइन करा ना जो कह ना बाल भाटिका स्टार्ट होचे बाल भाटिका। हाँ ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिलाने व्हिच न्यू इनिशिएटिव हैज एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो पिलाने आर आंसर हो पिलाने ऑप्शन बी दैट इज नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN है मन रखता है। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड इन एनईपी 2020। तो पिला माने आर आंसर हो जाओ पिला नंबर ऑप्शन डी दैट इज 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ठीक अच्छे व्हिच of the following is a part of NEP 2020 emphasis on promoting vocational education। तो पिलाने आर आंसर हो पिलाने ऑप्शन ए दैट इज vocational education will begin from class 9। ठीक अच्छे क्वेश्चन 7 पिलाने NEP 2020 proposes the introduction of which type of courses at the UG level। तो पिलाने कौन इंक्लूड करछे पिलाने ये इंक्लूड करछे पिलाने हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल कोर्सेस है तापर देछि पिलाने which body is proposed to be set up to oversee higher education in India under NEP 2020। तो क्वेश्चन नंबर 8 रे पिलाने आंसर होबो पिलाने हमारा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल दैट इज NHERC ही जो पिलाने नंबर करेक्ट आंसर आर फुल फॉर्म भी पिलाने पचारि पारे। ठीक अछि तो ये पॉइंट पिलाने मन रखि दो काइन तमरे बीएड भी आछी ना बीएड एंट्रेंस भी आछी कोन हायर एजुकेशन अंडर आछी तो ये क्वेश्चन पिलाने इंपोर्टेंट। ठीक अछि नेक्स्ट देखिए पिलाने हमें What is the new policy regarding board exam under NEP 2020। तो पिलाने कौन हबो ये कौन रूल करछि पिला हमने रूल करछि पिलाने बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर है वर्ष दिथर बोर्ड एग्जाम हबो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए NEP 2020 एडवोकेट्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्कूल करिकुला। तो पिला माने आर आंसर कौन हो पिला माने आंसर हो पिला माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट इज SDGs। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने अंडर NEP 2020 व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स टू बी अपॉइंटेड। ठीक अच्छे कौन देखिए पिलाने आंसर कौन हो पिलाने को आंसर हो पिलाने ऑप्शन सी दैट इज बैचलर्स डिग्री विथ बीएड। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which of the following does NEP 2020 emphasize for the education of children with disabilities। ठीक अच्छे पिला ये कौन हो पिला मन रख जब भी तुम डिसेबिलिटी कथा आसना पिला वर्ड खोज ऑप्शन रे से वर्ड हो पिला इनक्लूजन इनक्लूजन INCLU लिखि दो INCLUSION इनक्लूजन ना इनक्लूसिव बोल लिखि ना इनक्लूजन ना INCLUSIV इनक्लूसिव देखो कुल लिखाई एक लिखाई देखो ऑप्शन सी लिखाई कौन इनक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स विथ सपोर्ट है ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने NEP 2020 emphasizes the importance of which of the following for school education। कौन करछि पिला माने आर आंसर पिला कौन ना ऑप्शन बी दैट इज मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने which concept does NEP 2020 introduce for assessing students progress। ठीक अच्छे यहाँ भी पिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगुरी आसी बोधे सीटेक्ट आसी बोधे क्वेश्चन। ठीक अच्छे तो देख ये कौन कर NEP 2020 केमी आम आसेस करा पिला प्रोग्रेस ना होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स विथ ए फोकस ऑन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। तो पिला क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो ऑप्शन बी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला which type of curriculum does NEP 2020 focus on
for children between ages 3 to 8 years. 3 to 8 years ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଦେଖ ନା କେମିତି ଖେଳିବା ନା ବା କେମିତି ପଢ଼ିବେ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ପ୍ଲେ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ with a focus on foundational skills ठीक ଅଛି ଆମର ବେସିକ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ବା ବେସିକ୍ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଇଗଲା ସେ ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହାଉ ଡଜ୍ NEP 2020 ଏମ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ अर्ली ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ अर्ली ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ କୁହ by making early childhood education a part of formal schooling ठीक ଅଛି that is option B will be your correct answer ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने क्वेश्चन नंबर 17 which of the following is a key initiative for enhancing access to higher education under NEP 2020 आंसर कौन हो पिलाने देखो establish a new private university no including foreign university no देखो तापर कौन देखिए देखो क्रिएटिंग ए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज तो ये हो पिला नंबर करेक्ट आंसर ठीक अछि क्रिएटिंग ए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर स्किल्स एंड competencies ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर यूजी प्रोग्राम्स अंडर एनईपी 2020 तापर आर आंसर कोन हो पिलाने आर आंसर हो ऑप्शन सी दैट इज 4 इयर्स विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने हाउ डज एनईपी 2020 प्रपोज टू improve teacher education केमती प्रपोज करछे पिलाने ना by increasing the duration of teacher training courses to 4 years हैला एबे कौन हम 4 year integrated बीएड कोर्स बाहर ना ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हाट इज द की फोकस ऑफ एनईपी 2020 विथ रिगार्ड टू डिजिटल एजुकेशन तो कौन कह पे ये कहे पे कौन कर ना टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस ऑल लेवल्स ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी ही जो पे करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which commission's report served as a foundation for the development of NEP 2020 तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 21 आंसर कौन हो पिलाने क्वेश्चन नंबर कौन हो पिलाने which commission report served as a foundation for the development of कौन पिलाने NEP 2020 आंसर को which commission's report served as a foundation for the development of NEP 2020 को तो पिला मैंने सुनो देख पिला मैंने कौन होता ना ये जो थी ना पिला माने के यार आंसर पिला माने TSR सुब्रमण्यम कमिटी ये केबे आस्तला पिला माने जान ना ये आस्तला तमरो 2016 रे आस्तला ठीक अछि 2016 रे आस्तला ठीक अछि मन रखतो हला ही नहीं तो पिला ये कोन हबो आ बेसिस रे कोन हेतिला ना NEP 2020 हेतिला ओ NEP 2020 जो कमिशन द्वारा करा हेतिला से कमिशन चेयरमैन के थिले पिला माने थे थिले पिला माने के कस्तूरी रंगन नाम मन रखता के कस्तूरी रंगन थिले तार चेयरमैन हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर रिकमेंडेशन बाय TSR सुब्रमण्यम कमिटी रिलेटेड टू NEP 2020 तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हिजो कोन पिलाने 22 आंसर कोन हो पिलाने strengthening vocational education and skill development ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू NEP 2020 तो पिला माने आंसर कोन हबो और आंसर हबो पिला माने हमरा ऑप्शन बी दैट इज टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ करिकुला एंड टीचिंग प्रैक्टिस अक्रॉस स्कूल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने how does NEP 2020 aim to support teachers continuous professional development आंसर हो पिला माने by establishing a national professional standards for teachers that is your option B will be correct answer ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए according to NEP 2020 how will the assessment of the students be changed in school केमती चेंज हो पारे पिला माने देखो क्वेश्चन नंबर 25 र आंसर कोन हो पारे देखो by promoting more frequent formative assessment and eliminating summative assessment तो ऑप्शन बी विल बी
करेक्ट ठीक अच्छे पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने ओके देख भाई मु +3 हाँ केमी बीएड में प्रिपेयर हेबी कुह प्लीज ऑलरेडी कही सारी प्लेलिस्ट रे अच्छी हाँ प्लेलिस्ट जाए देखिपर हाँ रंजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पिलानी which of the following initiatives is a focus area in NEP 2020 NEP 20 कोड़ा फोकस एरिया थिला पिला माने देखो आर आंसर कोन पिला माने ऑप्शन बी दैट इज एनकरेजिंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिए पिला क्वेश्चन नंबर 27 देखो हाउ डज एनईपी 2020 propose to enhance access to education in remote areas त पिला केमिति ना बाय यूजिंग technology to promote learning in rural and remote areas option C will be your correct answer ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 28 देखो पिला माने which of the following will be introduced as a part of a flexible and multidisciplinary approach to education as per NEP 2020 देखो courses in a single stream of education general education and vocational courses will be separated now students will have the option to choose a mix of subjects from arts science and vocational fields तो प्लान ऑप्शन सी टा हबो करेक्ट आंसर पिला माने कहे ना ये कोन अप्रोच नोची NEP 20 नंबर मल्टी डिसिप्लिनरी एवं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच नोची आंसर कोन हो जो पिला माने आंसर हबो पिला माने ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर NEP 2020 हाउ डज द पॉलिसी प्रपोज टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्कूल लीडरशिप केमिति पिलानी ऑप्शन बी बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू हेडमास्टर्स एंड स्कूल लीडरशिप टू डिजाइन द करिकुलम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलानी by focusing on the professional development of school leaders सरला क्वेश्चन नंबर 30 देखो पिलानी which of the following does NEP 20 recommend for the promotion of digital learning in schools हला केमती करा हिची पिलानी ना by creating कोन a national educational technology forum for technology integration in schools that is option B will be your correct answer एडा पिलानी मन रखितबा ठीक अछि मन रखितबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन असला पिलानी कोन क्वेश्चन नंबर 31 हाउ डज NEP 2020 address the challenges faced by students in the learning process कोन ना by integrating regular assessment with a focus on skill development that is option B will be correct ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया 32 which of the following is a key strategy for promoting innovation and research in higher education under NEP 2020 32 A that is establishment of research and innovation hubs in universities that 32 A ठीक है 32 कोन हबला आंसर ए हबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलानी व्हाट इज NEP 2020 proposal for improving the quality of private schools ठीक अछि केमिति ना बाय इंक्रीजिंग रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट स्कूल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन डज NEP 20 recommend for adult learners तो ये दिच पिलाने लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दैट इज ODL ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने 35 what is the envisioned approach of NEP 2020 for addressing the problem of learning gaps in children तो पिला माने आर आंसर कोन हबो आंसर हो पिला माने ऑप्शन बी दैट इज फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल स्टूडेंट्स दैट इज मन रखो पिला माने बा FLN हला एमने मन रखला फंडामेंटल कौन लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स बोली कहा होची ठीक है बेसिक बा फंडामेंटल बोली भी कहा होची ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलानी 36 हाउ डज NEP 20 propose to improve the quality of education in rural areas केमिति रे पिलानी करिवो ना भाई कोन करिवो प्रोवाइडिंग कोन करिवो रे पिलानी टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड रिसोर्स फॉर रूरल स्टूडेंट्स तो हमने ऑप्शन सी ही जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिया पिलानी क्वेश्चन नंबर 37 which institution has been proposed by NEP 2020 to improve the quality of education in the country तो पिला क्वेश्चन नंबर 37 आंसर कोन जो पिला ने नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम ठीक है दैट इज ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी ही जो हमरा करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला ने क्वेश्चन नंबर 38
What is the proposed focus for promoting school education in NEP 2020 in terms of subject content? तो पिलाने क्वेश्चन नंबर 38 कौन हो पिलाने क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कौन हो पिलाने ना ऑप्शन डी दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट विथ ए फोकस ऑन critical thinking and creativity ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने व्हाट इज द फोकस ऑफ द न्यू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एज रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020 कौन करियो पिलाने ना conducting entrance exams for higher education and professional courses that is option B will be your correct answer. Next question देखिए अपने last question of this session. Now under NEP 2020 how are the roles of parents envisioned in the learning process? ना पिला हमने कौन हबो ना ऑप्शन हबो आर पिला हमने देखो एनकरेज फोकस ओनली ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हबो नुह हैला पेरेंट्स विल हैव अ लिमिटेड रोल नुह हैला parents will play an active role in school governance and decision making option C हबो पिला हमन नंबर करेक्ट आंसर ठीक अछि तबले हम एडे ऑलमोस्ट पिला ने 120 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे ठीक अछि हैला होप कि किछ हेल्पफुल हेतिबो थैंक यू फॉर वाचिंग ठीक अछि हैप्पी लर्निंग।